Ladies and gentlemen, we have with us the President of FINA, Sri Bajrang Lohia ji. May I request Sri Rajiv Agarwal, who is the Vice President of FINA, to do the honors of felicitating Sri Bajrang Lohia, who is the President of FINA. And finally, it is a pleasure to welcome Shri Vaibhav Dange, founder, Build India Foundation. May I again request Shri Rajiv Agarwal to kindly felicitate Shri Vaibhav Dange. Ladies and gentlemen, may we have a warm round of applause once again to all our distinguished guests. And now, ladies and gentlemen, to share the perspective of the organizing partners, may I invite Shri Bajrang Lohia, President FINA, to address the gathering. Honorable Union Minister Sri Nitin Gadkari ji, Honorable Chief Minister of Meghalaya Sri Conrad Sangma ji, Honorable Chief Minister of Nagaland Dr. Nipu Rio ji, Honorable Deputy Chief Ministers of Meghalaya and Nagaland gracing us, Shri S. Dharji, Piston Tensomji and Tiajit Zeliangji, Distinguished Donor Secretary Sri Sanjay Jajoji, Chief Secretary Meghalaya Shri Shakil P. Ahmedji, Commissioner Secretary Sanjay Goyalji, our own Dangeji, Captains of Industries, friends from across the 8 states, a very warm welcome to you all, to Shillong, and to this largest gathering of its kind our Northeast has ever hosted. It's FINA's privilege to receive you, and I say privilege deliberately, because FINA is an industry body. Unlike most others, our members serve entirely gratis, giving their time and toil not for themselves, but for the Northeast. In this endeavor, we have found a natural ally in the Build India Foundation and Sri Vaibhav Dangeji, whose national vision for infrastructure has helped bring this summit to life. So today, we welcome you not as hosts to guests, but as partners to partners, as one team working together for this region. Honorable Gadkari sir, your presence is a statement in itself. Even as we gather, foundation stones are being laid all over Meghalaya, 3,000 crores of new highways in Meghalaya alone. In addition, you have just yesterday announced several highway projects in Assam. You have often reminded us that a nation does not become prosperous and then build good roads. It builds good roads and then prosperity follows. So you have given that truth to the whole of India, and today you bring it to our region, our hills. We welcome you with the deepest gratitude and admiration. Honorable Conrad Sangmaji, this summit stands because you wanted it to stand. Your personal interest, your faith in this region's promise has turned an idea into this hall full of possibility. Under your leadership, Meghalaya has become the second fastest growing economy in all of India. This is a proof that an aspirational Northeast is no longer a hope, but a fact. Meghalaya is not merely our host today, it is showing the entire region that what our region can do. And as we begin, we must begin where this region's new story truly begins, with our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. He gave us the name that changed how India sees us. He called the Northeast Ashtalakshmi, the 8 forms of prosperity. He told the nation, for us, East means empower, act, strengthen and transform. Where once the Northeast one was viewed through distance and neglect, today it is viewed through opportunity. That is no small shift. This is a nation finally turning its face towards its own sunrise. So here is the message industry brings to this summit. We are no longer waiting in the margins of India's growth story. With Ashtalakshmi's blessings, every state here is saying, we are ready for investment, we are ready for leadership. Friends, let us
not merely discuss the future of Northeast over these 2 days, let us build it. So I welcome you. Thank you so much. We thank you, Sri Bajrang Lohia ji, for your speech. May I now request Dr. Shakil P. Ahmed, who is the Chief Secretary to the Government of Meghalaya, to present his address. Sir. A very good afternoon. Namaskar. Most respected Union Minister for Road Transport and Highways, most respected Chief Minister of Meghalaya, Deputy Chief Minister Batin Song, Bas Nobhalang, Chief Minister of Nagaland, Deputy Chief Minister, Secretary d'Honor, senior delegates from Build India Foundation and co-organizer of this event, respected delegates from industry and media, ladies and gentlemen. It's a really historic moment to see the champion of transformation in India through the infrastructure, roads and bridges is amongst us. And the visionary leader from the states are also here, and industrial leaders are here to collaborate and work together. The way we saw Northeast through the lens of distance, periphery, and far away, these are all changed. Probably, if I can use a word, I'm not so good in Hindi. जब हम कष्ट दशमी सोचते थे यहाँ काम करने के आने का टाइम में, जब मैं फर्स्ट पोस्टेड हुआ था केरल कन्नूर से मैं आया था डिब्रूगढ़ में, सबसे दूर इलाका. So my grandmother was alive. She asked me, कहाँ जा रहे हो? Where are you going? I said, Dibrugarh. She said, it's very closer to Myanmar. So that far, the mainland perception about Northeast was, by and large, it's far away from what you can see or view. That has changed. From a perception of Kashta Dashmi, Honorable Prime Minister and the government has changed into Ashtalakshmi, where is the focus of prosperity, welfare and hub for untapped potential. This has changed and transformed this entire area. It is evident that Honorable Prime Minister himself visited this place in 12 years more than 60 times. And the Union Ministers visited more than 700 times. So the focus of even physical presence is evident, visible and palpable. The Northeast, those who are living in Northeast today, we are living in a historic moment. We are into a paradigm shift where development is actually in our doorsteps and the industry can really tap into it, wherein we could really make the place a different place altogether with smart investment, utilizing the available infrastructure and expanding infrastructure. Maybe a slight change in our perspective, looking Southeast Asia and Far East as the hub would really change the whole dynamics of evacuating our produce far better from Northeast, because many of our products goes to Mumbai because it is far away. Otherwise, Kandla port is tidal port because only feeder vessel move from there. So it has to go to Mumbai. All our tea and products goes to Mumbai. If we can actually, sir, my aapse guzarish hai, sir, if we can really try to use Chittagong port, which uses the mother vessel, and from Tripura it is 3.5 hours, from Shillong it is 7 hours, from Guwahati it is 9 hours. It has better berthing space of 26 feet, all weather, mother vessel can go, and we should using that potential to evacuate our products from Northeast. Even digital transformation is waiting. Northeast is full of potential English-speaking people. The digital area and the area where you can use biotechnology, this is the hub for industries to come in and invest. The road connectivity has seen a tremendous change, which is unbelievable, wherein there was only 10,000 kilometer roads, which became 16,000 in 10 years period. In PMGSY alone, it has grown to 42,296 kilometers with an investment of more than 47,000 crores. This shows the heart and soul of the Northeast is realized. It is no more periphery. It is the pole of India's
future and the vision for India's development. I urge and request the industrial partners and the stakeholders that let's work together, take advantage of the situation and make this place from a Kashtadashmi Amavasi days into a Ashtalakshmi, a full moon days of brighter prosperity, welfare and development for the entire Northeast so that we can live in a better future and better tomorrow. Jai Hind, Kuble Shibon, Mithela, Jai Jagat. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your insightful remarks and for your perspectives on the opportunities that lies ahead in the Northeast. And now, ladies and gentlemen, to address the gathering, may I now invite Shri Sanjay Jaju, Secretary, Ministry of Development of the Northeastern Region, Government of India, sir. The chief guest of today's function, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad K. Sangma ji, Honorable Chief Minister of Nagaland, Dr. Nifu Rio ji, Honorable Deputy Chief Ministers, Chief Secretary Meghalaya, Shri Bajrang Lohia, Shri Vaibhav Dange ji, all those present in this gathering today, distinguished colleagues from central ministries, state governments, organizing group, FINA, Build India Foundation, industry leaders, development partners, ladies and gentlemen. It's indeed a privilege to be part of the Northeast India Infrastructure Summit 2026. At the outset, I extend my sincere appreciation to Government of Meghalaya for hosting this very important event, and we are honored actually by the presence of our chief guest, whose leadership actually has transformed India's connectivity landscape and significantly strengthened infrastructure across the northeastern region. We all meet under a theme, building connectivity, building growth. And friends, this captures the truth that Northeast has been living over the last decade. When we speak of infrastructure, we often picture roads and bridges. But for our region, but for the Northeast, infrastructure has always meant something larger. It is a catalyst that is connecting people to opportunities, businesses to markets, and communities to a better quality of life. Ladies and gentlemen, Northeast today stands at a very pivotal moment in its development journey. Once perceived, as the Chief Secretary was saying, as geographically remote, the region is now rapidly emerging as a strategic growth engine and India's gateway to the Southeast Asia. As our Honorable Prime Minister says, Ashtalakshmi, each with a distinct strength, are today moving together. And it's fitting that Meghalaya, under the Honorable Chief Minister, Shri Conrad Sangma ji, has chosen to host the first summit of this scale, a clear signal that Northeast is open, ready, and ambitious. Friends, this journey has not happened in isolation. What has made infrastructure delivery possible was the restoration of peace and stability across the region. At the same time, over the past decade, sustained investments in roads, railways, airports, waterways, digital connectivity, border infrastructure has not just enhanced regional integration, but it has created new opportunities for trade, tourism, entrepreneurship, and employment. The change, as we can see, is visible and measurable. Beyond the physical infrastructure, the scale of support which has been unlocked for various other activities, which we in the Ministry of Donor are looking at, the tourism projects, the tourism circuits which are being developed across the northeastern states. And recently we have also launched the USP projects for different states. You have the Mizoram ginger, you have the Meghalaya turmeric, you have coffees of Nagaland, we have the Muga silk from Assam, the organic Sikkim project, we have the kiwi from Arunachal Pradesh, we have the polo coming in from Manipur, and we are building upon the existing strengths of all these projects to ensure that we create proper value chain development across these verticals. In Meghalaya also, large number of projects are being taken up. Right across, we have the 4-lane road project sanctioned at an estimated cost of roughly 150 crores, which is getting completed very soon. We have the IT park at Tula, which is also going to create a digital economy hub for Meghalaya.
There are other projects also which are happening across the entire northeastern region, and friends, the significant progress in all these projects are going to create a single coherent system across the northeast. Another question that we have been addressing in the Ministry of Donor is also guided by the vision for the Northeast. Very recently, right in this town, we had the Northeastern Council headed by the Honorable Home Minister, wherein 8 different high-level task forces chaired by chief ministers of the northeastern states have looked at various areas of concern for the Northeast. And in one of the high-level task forces, we also have examined the infrastructure, logistics, and connectivity. All these initiatives, friends, as we pursue them further, what will remain at the core in Northeast is sustainability. Northeast's unique ecological richness calls for climate-resilient infrastructure, green technologies, and responsible resource management. Equally important is partnership. The strong foundation already laid will be carried forward through coordinated efforts across central ministries, state governments, industry, and development partners, and with the Ministry of Donor that I represent here today, acting as a facilitator of convergence with a smaller, well-chosen, high-impact projects, often delivering visible results faster than large but slow-moving ones. Friends, let us return to where we began. Building connectivity, empowering growth. This summit, with all its plenaries, CEO roundtables, exhibitions, B2G and B2B interactions, offer an invaluable platform to each one of us to exchange our ideas, forge partnerships, and identify actionable opportunities. We have proven over the last 12 years that this region can move from the margins to the mainstream. We now have both the achievements behind us and a clear regional roadmap before us. Let us use them to build a Northeast that is economically vibrant, socially inclusive, environmentally sustainable, and globally connected. A region that does not merely participate in India's growth, but helps lead it. We thank the Government of Meghalaya, FINER, Build India Foundation, and each one of you for being part of this landmark gathering. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Sri Sanjay Jaju, for the very inspiring speech. I now take this opportunity to invite our guest of honor, the Honorable Chief Minister of Nagaland, Dr. Neiphu Rio, to present his address. Sir. Honorable Union Minister, Mr. Nitin Gadkari ji, and my colleague, Mr. Conrad, Chief Minister Meghalaya, respected Deputy Chief Ministers, Ministers, Honorable MLAs who are here, and our respected leaders and the captains of the industries and development partners, officers, Donor Secretary, Chief Secretary Meghalaya, and other officers, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank the organizers and the Meghalaya for hosting this important summit. And I'm grateful for the opportunity to address this distinguished gathering and share the aspiration of my state and also give a word of appreciation to our Honorable Minister. Sir, we thank you for gracing this occasion in this very important Northeast India Infrastructure Summit 2026 in Shillong. Your coming here is a sign of your love and concern for the Northeast. Sir, during your time, you have done a lot of things in the country, but particularly in the Northeast also, you have reached to the nook and corner of all the states. We're grateful in one particular is
the four-lane road from Guwahati to Dimapur and to Kohima that has reached us. So it has got the distance shorter by 50% because of the road smoothness and quality. The Northeast is entering a new phase of transformation under the Act East policy, and the Government of India's sustained focus on regional connectivity. Platforms such as the summit play a crucial role in bringing together government, investors, and stakeholders to translate that vision into reality. I thank my colleague Conrad Sharmaji for his vision and hosting this important summit, and requesting me, I express my happiness and thanks. Not only my Deputy Chief Minister as Highway Minister in charge, and ministers and first-timer young elected members, they are also participating, and I am told that they will also be participating in other topics. Sir, as you are aware, Nagaland state is the oldest state after Assam, and Shillong was the capital of Assam. And that's how we started. However, Nagaland has a peculiar situation of its local problem of Naga issue, and also the Article 371A has the land issues. But all that has overcome, and we have passed an act to relax the land laws, and also for execution for economic activities. As you are aware, infrastructures, that is air connectivity, roads, and inland waters are very important. And Kohima is the only capital which has not got an airport, and we are pursuing. We hope it will be done early. And then as far as road is concerned, one very important, the other day I had the privilege of speaking to our Honorable Minister MORTH, Nitin Gadkari ji, and I apprised him of the Trans-Nagaland Highway, that is Foothill Road, about 400 kilometers, that is from east to south. That road is very, very important because it is an oil-bearing area and also rich minerals, and there will become an activities of economics. And this passed through 7 districts with 11 lakhs populations inhabited. And that's how all these things to happen. You need a good road, and I'm extremely grateful to Honorable Minister, because when land issues were going on, we had pursued with the public, and the tribal hosts, the civil societies agreed to give free of land for 12 meters and 4-lane road to be constructed, 400 kilometers. This 18 kilometers, he assured us that government will pay compensation and the match. But I'm telling you, I assure you that even compensation is given, the price will be minimum. The state will see that they don't ask unreasonably, and will help that it is resolved soon. Now we have a few national highways to be connected from one to another one. And therefore, this I will, lack of time, I will give in written so that you can handle it. I will not go through details. Regarding upgradation of National Highway 202, stretching from Mokokchung to Meluri via Tungchan, Samator, Kiphere, and Akhego. I mean, its length is 283 kilometers. So this is awaiting for sanctions due to certain administrative issues. I hope it will be done soon. Then east-west corridor of this Sobat Newland district to Pangsa in Noklak, that is Myanmar border. This will connect east-west and in the middle of the state. I hope this will be considered
soon. Now, since, as mentioned, there are land issues, therefore, the state government has passed a new law, and that though land compensation is given, then the land will be surrendered to the government, and government will lease to the industrialist or to national highways for 99 years lease, which is extendable, which will not be creating any hurdles. So we are happy that inland waterways and multi-modal connectivity, this we had pursued, and our big river flowing to Myanmar, that is Lower Tiza Zinki, it is has been declared as National Highway 101, and this will go and touch the Chimwing River in Thawanti Port. Why I'm mentioning this is because this area, you have a huge mountains and mountains and mountains of limestones and marbles. And in that river, where you are going to do inland water, you upstream, we are going to develop hydro. And that's how that mega cement plants of 3-4 can come and settle. Because on the riverside, it's good, and if you travel by waterway, then the cost will come down. Right now, we have one set up by the government, and private has taken over. They are producing cements, which is feeding the eastern portions, including some part of adjacent to Nagaland. So your industries, we have huge potential, but so far Nagaland, because of our issue and land issues, there is no industries. And therefore, we have started and we had adopted to make a Nagaki global city. This is in the Act East policy, and this will become an economic hub. It has a potential of becoming a big city. The survey is done. IDAS consultant had done the master plan of 39 square kilometers, and we have already started developing the master plan roads, and then one sports complex of 30,000 seating capacity, and then the mega tourist hub, where we have got a sanction to develop the amenities, including the golf course, and industries and others are participating. We like to also host such a summit to attract the attention of the developers. We had adopted a Nagaland Special Economic Development Zone, and therefore all this relaxation will come. And as you are aware, you might have seen in the news, the other day, 11th, this June 26 in Delhi, in presence of Honorable Union Home Minister Amit Shah ji and Petroleum Minister Mr. Hardip Singh Puri, and Assam Chief Minister, myself, and my Deputy CM Tia Zeliang, and my colleagues, ministers, and other MLAs were there. In that, we have signed an MOU to start the abstraction and exploration of oil, which has abandoned since 1994. ONGC has taken starting in 1973, and it came to a halt in 1974. And therefore, this will be revived, and we have started surveying, and we're glad that we have a huge deposit of oil, and it's not only in 1-2 districts, it is in the foothills and up into the hills also. There is a well and a kitchen of oils is in Nagaland. This is what we learned. We have full of gas, and therefore, if we explore and then exploit, I think this will help not only the state or the neighboring state, Northeast, but also the whole country. This is our belief. And
the Geology Survey of India had given in one plenary session in the Northeast about your state, what minerals you have. That was told to us, and then it indicates that rare earth materials of coal, cobalt, nickel, and all these rare earth items are there. And that's how the Ministry of Mining had conveyed to us to go for auction. We told them to keep in abeyance before we discussion because of our land rules, and now we are ready for tendering. So I think the industrial leaders may keep this in mind, those who are operating in that sector also. Now, in the other day, we had launched 4 food processing units in 4 districts. So those agricultural products and contract farmings, through these organic productions for processing of dry, of different kind of items like ginger, turmeric, and then your kolar, rasma, and other chilies and all kind of spices is being done. So contract farming and industry may like to guide us also and partnered with us in this sector also. And then we have discussed in the NDC plenary session also about our area having a lot of coffee productions. We are happy that it was launched some days in Delhi by donor minister, and then a huge plantation is going on. We have we intend to cover up to 5,000 hectares, and that's how, because it can stay and survive and need protection. That's how we can protect our forest. That's how we are doing that. And we are also cultivators of agar, and that's how the share of the state should be increased. That is how we had plea to the Northeast. Not only coffee, but as you are aware, some of you in the last sitting of introduction, I have heard that some are into rubber business. You are aware Nagaland has a lot of rubber growing, but these are not managed properly, otherwise there's a huge potentials. And as far as tourism is concerned, you are aware of Hornbill Festival, which is in 1st December to 10 December. In 10 days, last year also, about 3 lakhs people attended. That is local, national, and international. Sir, I had spoken to Home Ministry because in the last minute they had imposed this your protected area permit, and that's how the scale of tourist flowing is becoming a problem. Therefore, that relaxation should be given. And we had discussed earlier also, we had taken up, but it was not fully implemented. But like people coming to Nagaland, direct flight from your Delhi or via Calcutta, via Guwahati, what people they come first to Nagaland, they should have a circuit of the whole Northeast, so that after Nagaland or after Guwahati, they should do the neighboring state, because it will be good that they come with more time and then plan. That once they come in with their time and money, they should visit few states so that it will benefit everybody, and they will that also they will be enriched with the resources we have and the rich culture tradition, the environment, and the people. So lastly, as mentioned about the Dimapur bypass road, 4-lane, it is ready for inauguration, and therefore we'll be submitting a letter today, and please make time to visit Dimapur so that you can inaugurate that bypass, which is a portion from Assam and then
another portion in Nagaland. With this few words, I thank the summit for giving me an opportunity to share my views. And thank you. God bless. Thank you, Honorable Chief Minister of Nagaland, for sharing your valuable views. Ladies and gentlemen, we now come to the release of the Knowledge Papers and Vision Report, a publication that captures the stories, ideas, and achievements that reflect a Northeast whose potential is no longer a promise, but a reality. This publication has been made by a special knowledge committee headed by Shri Atul Kulkarni ji, Member Board of Governors, IIM Shillong. So may I now request Shri Kulkarni ji and Rajiv Agarwal, convener for Northeast India Infrastructure Summit 2026, to place the report to the dignitaries for the release. And may I request our Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Government of India, Shri Nitin J. Gadkari ji, to kindly release the document along with the other distinguished guests on the dais to kindly do the honors as well. Ladies and gentlemen, let's give a warm applause, please. Build India is a documentary series hosted by infrastructure experts Sri Vaibhav Dange, aired on Discovery Channel and Discovery Plus, showcasing India's most ambitious infrastructure progress. May I request our honorable dignitaries on the dais to kindly launch the promo of Build India Season 2. A round of applause, ladies and gentlemen. 7 billion people share this planet, and one nation is rewriting what's possible. Highways through mountains, ports redefining continents, airports born from nothing, cities moving faster than ever before. The greatest projects in human history deserve to be told. Build India, Season 1. Srinagar to Kanyakumari, Gujarat to West Bengal, the frozen north to the deep northeast, every compass point, every terrain. One extraordinary season, colossal, cinematic, unstoppable. One platform, one mission. Document the infrastructure defining India's century. Broadcast it to the world. Your project, your people, your legacy. Your story. The greatest projects deserve the greatest stage. We are building tomorrow today. From green energy to high-speed metro networks, sustainable infrastructure, connecting millions, creating opportunities, transforming lives. Indian infrastructure is writing India's new story. Namaskar, I am Vaibhav Dange. Let's go discover what it takes to build India. Watch Build India, Season 2, only on Discovery Channel. Ladies and gentlemen, as the host state of this summit, Meghalaya has played a pivotal role in bringing together stakeholders from across government, industry, and enterprise for this important dialogue. So it is a privilege to invite Shri Conrad K. Sangma, the Honorable Chief Minister of Meghalaya, to kindly give us a special address. Honorable Minister
Government of India, Shri Nitin Gadkari ji, my colleague, Honorable Chief Minister of Nagaland, Shri Nipio Rioji, our respected Deputy Chief Ministers of Nagaland and Meghalaya, our officials from the state government as well as from Government of India, members of FINER, Build India, and all the delegates who have joined us here for this बात शुरुआत करना चाहता हूं और ये एक मैनेजमेंट रिलेटेड कहानी है। सर, आप तो MBA फाइनेंस हैं, तो शायद आप ये कहानी सुन चुके होंगे, लेकिन एक कंपनी ने एक बार 2 अपने मार्केटिंग एजेंट्स को एक आइलैंड में भेजा और वो कंपनी जूते बनाती है। और जब ये 2 मार्केटिंग के लोग गए, 1 महीने बाद दोनों वापस आए। तो पहले मार्केटिंग एजेंट ने कहा कि सर कोई फायदा नहीं है वहां जाके। तो उनके बॉस ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि सर कोई जूते पहनता ही नहीं वहां पे, सब नंगे पांव। तो कोई जूता पहनता ही नहीं तो सर वहां जाके फायदा क्या है? फिर दूसरा मार्केटिंग एजेंट आया, उसने कहा कि सर इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें कहीं नहीं मिल सकता। तो उसने कहा क्यों? उसके मालिक ने, उसके बॉस ने। तो दूसरे मार्केटिंग एजेंट ने कहा सर क्योंकि वहां कोई जूता पहनता ही नहीं, यानी कि सारी मार्केट हमारी है, हम वहां कुछ भी कर सकते हैं और पूरे पॉपुलेशन को हम जूता बेच सकते हैं। सर, आज अगर आप पूरे दुनिया और पूरे देश का जो अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं, आज बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां डेवलपमेंट एक लेवल तक पहुंच चुकी है। एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी एरियाज में जो रास्ते बनने थे, जो अलग अलग पावर के इश्यूज या पावर प्लांट्स बनने थे, या अलग अलग IT के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने थे, या पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें तो वो जो अपॉर्चुनिटीज जो शायद दूसरे देश के दूसरे भागों में नहीं है, क्योंकि काफी चीज आगे बढ़ चुकी है, वो अगर आप आज देखें तो नॉर्थ ईस्ट में वो अपॉर्चुनिटी है। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही सही समय है, यही समय है और सही समय है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें, पिछले सालों में, डेकेड्स में बहुत सारे परेशानियां, चैलेंजेस बहुत सारे आए। लॉ एंड ऑर्डर, इंसर्जेंसी के इश्यूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इश्यूज, और अलग अलग तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का ध्यान एक तरीके से, और इन चीजों की वजह से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को डेवलप होना चाहिए था, शायद नॉर्थ ईस्ट उस गति से शायद आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज का जो समय है, अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जगहों में आज शांति है। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकली, ज्यादातर स्टेट्सों में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या एक पॉलिसी स्टेबिलिटी एक तरीके से है। जो डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन को सही करने के लिए
और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए एक पॉलिटिकल विल, एक पॉलिसी और एक सोच आज नॉर्थ ईस्ट में है। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं हमारे मेघालय स्टेट का, जो आज पूरे देश में पिछले 5 सालों के नंबर अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में पूरे देश में जीडीपी ग्रोथ में मेघालय 3 नंबर पर है। और शायद 10 साल पहले कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि कभी मेघालय भी बड़े स्टेटों के साथ और अलग स्टेटों के साथ कंपीट कर पाएगा। लेकिन आज हम कंपीट भी कर रहे हैं और कई हद तक उन्हें पीछे भी छोड़ दिया। और मुझे विश्वास है कि यह गति और भी आगे जाके बढ़ेगी। आज अगर आप हमारा जो बजट देखेंगे, पिछले 8 सालों में मेघालय का बजट 2 गुना बढ़ चुका है और हम 3 गुने के जो लक्ष्य हैं उसके बहुत पास पहुंच चुके हैं। मुझे विश्वास है कि 28 तक या 29 तक हम लोग, जो हम 8 साल पहले थे उसके कंपैरिजन में हम लोग 3 गुना कुछ 2-3 साल के अंदर में हम लोग पहुंचेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, वो 6 गुना पिछले 8 सालों में 6 गुना बढ़ चुका है। आज अगर आप देखेंगे मेघालय को, तो कुछ ऐसी चीजें थी जब हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग करेंगे। आज देश में मेघालय पूरे देश में फुटबॉल, एक डेडिकेटेड फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम आज मेघालय में बन रहा है। 40,000 कैपेसिटी का स्टेडियम, करीब करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एक फीफा सर्टिफाइड फुटबॉल स्टेडियम, जो कोई भी इंटरनेशनल लेवल का गेम आगे जाके होस्ट कर पाएगा। अगले साल हम नेशनल गेम्स हम लोग होस्ट करने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारी अभी चल रही है। कुछ सालों पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग नेशनल गेम्स हम लोग होस्ट कर पाएंगे। आज यहां पे आते हुए आपने देखा होगा कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग बन रहे हैं। हमारी नई असेंबली तैयार हो गई, हमारा नया सेक्रेटेरिएट तैयार हो रहा है और शायद 1 साल 1.5 साल के अंदर हम लोग नए सेक्रेटेरिएट से हम लोग हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम हम लोग वहां से शुरू कर पाएंगे। मेघालय में एक भी होटल नहीं था और रादर एक भी 5 स्टार होटल नहीं था। पिछले 4 साल में हमने 2 5 स्टार होटल शुरू किए हैं और सर आपको जान के खुशी होगी कि अगले 3 से 4 साल में 8 और 5 स्टार होटल खुलने वाले हैं। उनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है और काम भी 4 में शुरू हो चुके हैं। हमारा एयरपोर्ट, जो एक लोकल एयरपोर्ट जो बन चुका था लेकिन बंद था, आज खुल चुका है और अगले 1 साल या 1.5 साल के अंदर हम जो है बड़े कमर्शियल फ्लाइट्स डायरेक्ट हम लोग अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के और अलग अलग देश के मेट्रो से हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट्स शिलोंग तक हम लोग ला पाएंगे। और आप जानते हैं सर, उससे बहुत बदलाव होगा। एक मेरा मानना है कि वो एक गेम चेंजिंग एक सिनेरियो होगा और इस तरह आज हर एक सेक्टर में आज आप देखेंगे मेघालय आगे बढ़ रहा है। और ये कहानी सिर्फ मेघालय की कहानी नहीं है सर, ये कहानी सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कहानी आज है। और सर मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि आज मेघालय में ही आपके एक मंत्रालय के तरफ से ही आज 50,000 करोड़ के रोड्स आज डेवलपमेंट आज मेघालय में हो रहे हैं। 50,000 करोड़, उसमें से 820 करोड़ के रोड्स आज पूरे हो चुके हैं। 310 किलोमीटर के रोड्स 820 किलोमीटर के रोड्स कंप्लीट हो चुके हैं।
310 किलोमीटर के रोड्स बन रहे हैं और 440 किलोमीटर रोड्स आज अपकमिंग है। और सर, आप आज 2-3 फाउंडेशन स्टोन भी डालेंगे, तो उसके बारे में शायद हम लोग अगले मीटिंग में उसकी जो है डिटेल फाउंडेशन स्टोन आप आज उसको डालेंगे। सो इस तरीके से सर आज देश का ध्यान नॉर्थ ईस्ट पर है और इसलिए इस सब सोच को आगे रखकर आज हमने ये समिट हमने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा समिट जो है वो हमारे स्टेट्स, हमारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, हमारे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स और प्राइवेट सेक्टर और बाकी सब स्टेक होल्डर्स को साथ लाके कहां क्या कमियां हैं, कहां मुश्किलें हैं, और जैसे आपने कहा कि कहां ये चुनौतियों को हम लोग एक तरीके से हम लोग एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करके सोच के हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इस समिट का यही मकसद है। और मुझे खुशी है कि आज सारे नॉर्थ ईस्ट से अलग अलग लेवल से लोग यहाँ पे आए हैं, सबने भाग लिया है और मैं एक बार फिर आप सबका मेघालय स्टेट की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो समिट हमने ऑर्गेनाइज किया है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए जो आज सही दिशा में चल रहा है, इसे जो गति देने की जरूरत है, मुझे विश्वास है कि इस समिट के द्वारा हम लोग वो गति यहां दे पाएंगे। Once again, I would like to take this opportunity to thank our Honorable Minister for giving his valuable time and coming to Shillong for this very important summit. I thank all the participants, different state governments, as well as different individuals and organizations. And as mentioned in my speech earlier, that we strongly feel that the time is correct for the Northeast. We just need to ensure that we are able to connect the dots. We need to be able to ensure that wherever there is any kind of paralysis or any kind of decision that's pending, the work should move faster. And we feel that summits like these will enable our different stakeholders to come together and be able to raise those issues and, more importantly, solve them and build that confidence among the private sector and among other investors that Northeast not only has the opportunity, but more importantly, Northeast is ready for the big change that we require. Today, Northeastern states are daring to dream, where we used to never dare to dream before. We used to always think that we as Northeast cannot do it because we are Northeast. But today, that thought has changed into the mindset that we can do it because we are the Northeast. And that is the confidence that we would like to share with the investors. And that is the confidence I hope that every single person will take with them when they leave this summit. And I hope that this summit will not just be a program, but this will be a beginning of a very long journey and a partnership that will ensure that we will take both the private sector, the government, and most importantly, the public to new heights in the days to come. Once again, I wish this summit the very best. And once again, sir, I thank you so much for your time and for your blessings that you have given to the state of Meghalaya and to the entire Northeast. I wish this summit the very best, and I wish each and every one of you the very best for the future. Thank you very much. We thank you, Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Conrad K. Sangma, for that very inspiring and thought-provoking speech. Sri Gadkariji's dynamic leadership, administrative acumen, and unwavering commitment to nation building has set benchmarks in infrastructure development. A leader of the masses, he pairs an extraordinary vision with a result-oriented approach. His insights inspire us all to rethink boundaries and innovate for the future. Ladies and gentlemen, the moment that all of us have been waiting for, may we welcome with a huge round of applause as I welcome the Chief Guest of the Northeast India Infra Summit 2026, the Honorable Minister of Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkariji,
to present his invaluable address to the august gathering here today. Sir. Honorable Chief Minister Conrad Sangamaji, Honorable Chief Minister from Nagaland Nipu Rioji, Deputy Chief Minister Meghalaya Sri Preston Tinsongji, Deputy Chief Minister from Nagaland T.R. Jeliangji, Deputy Chief Minister from Meghalaya S. Dharji, Dr. Shakil Ahmed, Chief Secretary Meghalaya, Sanjay Jaju, Secretary Donor Ministry, Sri Bajrang Lohia, President FINER, Vaibhav Dange, Founder of Build India, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का ऑर्गेनाइज करने के लिए चीफ मिनिस्टर संगमा जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 2014 में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जब बने तब उन्होंने दो चीज़ें निश्चित की। सबसे पहली बात ये कि हम देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने तय की कि हम नॉर्थ ईस्ट को विकास में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और मुझे खुशी है कि ये दोनों दृष्टि से जो डेवलपमेंट हुई है वो सब आपके सामने है। नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, रेलवे आ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भविष्य में नॉर्थ ईस्ट के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी कांट गेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री। Without industry and capital investment, we cannot create employment potential. And without employment potential, we cannot increase per capita income. And without increasing income, we cannot eradicate the poverty. गांव, गरीब, मजदूर, किसान की अगर प्रगति करनी है तो उसको रोजगार देने की आवश्यकता है। No philosophy can be taught to empty stomach, ये विवेकानंद जी ने कहा है। और इसलिए आने वाले समय में पूरे विश्व में जो चर्चा होती है वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की होती है। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत यूनो में की और उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स को हमने कैलकुलेट करना चाहिए। सुखांक, सुखांक का मतलब यही है कि अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, हमारे किसानों के लिए, कामगारों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, और एक प्रकार से गरीब आदमी जो है वो सम्मान के साथ जीना चाहिए। सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस को दूर करके समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही मकसद रखकर हमारी नीतियों के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि हमको भारत को विश्वगुरु बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। और अगर ये बनाना है तो हमको पूरे भारत का विकास करना होगा। ये नहीं होगा कि कुछ राज्य केवल प्रगति और विकास में आगे जाएंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे, तो ये नहीं होगा। इसलिए एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट 120 डिस्ट्रिक्ट को जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनका विकास की योजना बनाई गई। 550 जो ब्लॉक्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके विकास की योजना तैयार हुई। और मैं ये मानता हूँ कि ग्रामीण, रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं पिछले अनेक सालों से ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूँ, किसानों में काम करता हूँ, और इसलिए मुझे विश्वास है कि हमें केवल इंडस्ट्रियल
इकोनॉमी को विकसित करके नहीं चलेगा। हमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कल्याण करना है तो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित हमारी इकोनॉमी को, रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया को भी गति से विकसित करना होगा। ये जो अंधेरा है उसको हटाना होगा और प्रगति और विकास की ओर जाना होगा। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे जीवन की शुरुआत स्टूडेंट लीडर से हुई थी। तो मैं एबीवीपी का कार्य करता था, कभी आसाम में, गुवाहाटी, इधर उधर आता था। उस समय हमारा एक प्रोजेक्ट था, मेरा घर भारत देश। और नॉर्थ ईस्ट के लड़के उस समय मुंबई में, महाराष्ट्र में, नागपुर में हमारे यहाँ रहने के लिए आते थे, ताकि कोशिश ये थी कि उनको ये लगे कि ये देश हमारा है। और जब बातचीत होती थी तो उनको मन में ये भाव रहता था कि हमारे यहाँ कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। मुंबई, दिल्ली का विकास हो रहा, हमारे यहाँ रोड नहीं, रेलवे नहीं, एयरपोर्ट्स नहीं। तब ये मेरा घर भारत देश, ये प्रोजेक्ट में काम करते हुए तब से मैंने महसूस किया था कि जब विकास अगर समतोल नहीं होता तो जो विषमता जहाँ रहती है वहाँ कहीं ना कहीं नाराजी निर्माण होती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता का परिचय देकर हमारी सरकार ने इसको प्रायोरिटी दी। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी। और स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि यही भाव जो है, ये भाव जगाकर पूरी तरह विकसित करने का एक मौका हम सबको मिला है। जहाँ तक जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उसी के कारण मैं शिपिंग मंत्री भी था। उस समय ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग करने का मुझे मौका मिला। 9 जगह पर विशेष रूप से रोपैक्स शब नदी में शुरू करने का मौका मिला। ये जेटी जो है, अपना पोर्ट है गुवाहाटी में, उसका विकास करने का मौका मिला। हल्दिया टू वाराणसी वाटरवेज बनाने का मौका मिला। और तब मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी मंत्री थी और उन्होंने मुझे बुलाया। तब उस समय की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो ड्रेजिंग कर रहे हो ब्रह्मपुत्रा में, आप और 250 किलोमीटर अंदर आकर मुंगली पोर्ट तक करके दीजिए, तो हमारे विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मैंने सुषमा जी की तरफ देखा, तो मैंने कहा, सुषमा जी क्या करना है? तो उन्होंने कहा, आप कर सकते हो तो ज़रूर कर दीजिए, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। तो मैंने तुरंत कबूल किया कि मैं कर दूंगा और हम लोग 250 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा में मुंगली पोर्ट तक जाकर हमने ड्रेजिंग करके दिया। क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवा विकास नहीं हो सकता। और मुझे खुशी है कि चारों बातों का विकास समतोल रूप से अब नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात को लिख कर रखा है। जब मैं मुंबई में मंत्री था महाराष्ट्र में, तब मुंबई में 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सीफेस प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तब मुझे एक ने कहा था कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात आप अक्सर याद रखो। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड।
सही कह रहे थे, 5 स्टार होटल बन रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते कि 5 स्टार फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम होनी चाहिए, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। इसमें देरी लगेगी तो गड़बड़ हो जाती है। आप सबकी क्षमा मांगकर एक चीज़ जरूर बताता हूँ, मुझे माफ़ करना। जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, उनके डिक्शनरी से टाइम शब्द गायब हो गया। एक फाइल 3-3 महीने दबाने के कारण जो कर्जा निकाल के धंधा करता है, उसकी हालत क्या होती है, इसको आप इमेजिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब आपको 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगा, तब किराने वाले से लेकर पेट्रोल वाले से लेकर कैसा करना, उस समस्या का सामना होगा। तब आप समझोगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो वी नीड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने आप सबको बुलाकर आपसे समस्या समझाने की कोशिश की है, और निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट के, मेघालय के विकास के लिए निश्चित रूप से हमारे तरफ से हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। मैं आज तो मेघालय के बारे में बताऊंगा, और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मैं आश्वासित करूंगा कि 15-20 दिन में ही मैं नागालैंड में आऊँगा और आपके लिए भी पैकेज घोषित करूंगा, आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2014 में 10,000 किलोमीटर हमारी रोड लेंथ थी। आज 2026 में 16,290 किलोमीटर, यानी 1.6 टाइम्स बढ़ी है। मुझे खुशी है कि इसके साथ साथ ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में जो हम NH में काम कर रहे हैं, उसमें से टोटल NH प्रोजेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट में काम चल रहा है, प्रोसेस में है, वो अरुणाचल में हम 147 प्रोजेक्ट 3,600 किलोमीटर के 58,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। आसाम में 264 प्रोजेक्ट 4,300 किलोमीटर, ये 1,30,000 करोड़ का काम कर रहे हैं। मणिपुर में 83 प्रोजेक्ट्स 2,000 किलोमीटर 25,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। मेघालय में 92 प्रोजेक्ट 1,600 किलोमीटर, ये 52,400 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। मिजोरम में 74 प्रोजेक्ट 1,500 किलोमीटर 28,000 करोड़ रुपए के हम काम कर रहे हैं। नागालैंड में 85 प्रोजेक्ट 1,800 किलोमीटर 26,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। सिक्किम में 31 प्रोजेक्ट 490 किलोमीटर 11,100 करोड़ का काम कर रहे हैं। त्रिपुरा में 38 प्रोजेक्ट्स 1,000 किलोमीटर 22,000 करोड़ का काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ कि जो हवा में बात करता हूँ। तो मीडिया वाला को कहता हूँ मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लो, और एक भी बात नहीं होगी तो ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दो, क्योंकि झूठ नहीं बताऊंगा। तो ये जो है अभूतपूर्व रूप से रोड इंफ्रा तो नॉर्थ ईस्ट तो खड़ा हो जाएगा, और ये इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अभी बंगलोर IIM, कानपुर IIT और चेन्नई IIT ने एक अध्ययन किया। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में इंडिया की 16% थी, चाइना की 8% और यूरोप और अमेरिकन कंट्री की 12% थी। पर 4 महीने पहले उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि अब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 10% पर आई है। ये 4 महीने का पहले का रिपोर्ट है, पर आज मैं दावा कर सकता हूँ कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अब लगभग चाइना के बराबर पहुंची है। और अगर हम 8% अगर कम करेंगे तो वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट में उतना कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो मेरा विश्वास है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है, और इसके कारण निश्चित रूप से उद्योग व्यापार में हमारे लिए निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जो विशेष रूप से भौगोलिक बाधाओं से काफ़ी अड़चने हैं, मैं मुख्यमंत्री जी, दोनों मुख्यमंत्री जी को आह्वान करूंगा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा खर्चा करने की कमी है। आप लैंड एक्विजिशन करके दो, यूटिलिटी शिफ्टिंग करा के दो, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का क्लियरेंस करके दो, क्योंकि अब 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे।
मैं जब मंत्री बना था तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के 2014 में बंद पड़े थे, अकाउंट एनपीए हुए थे। तब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए। बाद में करीब 3,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को फिर मार्ग निकाला हमने, बैंकों के साथ बैठकर, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठा कर, और इस देश के बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। पर ये प्रोजेक्ट अड़चन में आए, इसका कारण लैंड एक्विजिशन नहीं, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं, आगे चलकर कोई रेलवे की क्लियरेंसेस नहीं, कहीं इसकी पाइपलाइन हटाने के लिए क्लियरेंस नहीं। मेरी कंडीशन है अब 90% सब क्लियरेंस के बिना हाथ ही नहीं लगाते। आप क्लियर करा दो, आप जो बोले वो प्रोजेक्ट हम फटाफट करेंगे, पैसे का कोई कमी नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि इसी नॉर्थ ईस्ट में हमने भूपेंद्र हजारिका सेतु, जो वर्ल्ड के लिए प्राइड है, ऐसा बनाया, धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज बनाया, जोराट माजुली, ये तो सनवाल के कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था मैं उनके इलेक्शन प्रचार में, और जब जाने के लिए हेलीकॉप्टर से समय लगा, और जब मीटिंग में हेलीकॉप्टर में मेरा हाथ दबाकर कहने लगे कि यहाँ ब्रिज घोषित कर दो, अब मैंने कभी झूठ प्रॉमिस किया नहीं, तो मैंने कहा कि ये सोनवाल जी इतने बड़ा कहाँ ब्रिज होगा, कुछ भी बात करते हो आप। तो उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया, मित्र के नाते कह रहा हूँ। उन्होंने कहा आपने मुझे पार्टी में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से जीतूँ तो घोषणा कर दो, और नहीं करोगे तो मैं हार जाऊँ चुनाव, तो आप जिम्मेदारी ले लो। तो मैंने घोषणा कर दी, और वापस आया तो मुझे बताया कि ये ब्रिज बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए लगेंगे। फिर मुझे बड़ा टेंशन था, अब क्या करूँ। फिर बैठे बैठे मैंने टेक्नोलॉजी बदली, उसके स्टैंडर्ड्स बदले, और प्रोजेक्ट 700 करोड़ में यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने फिर लिया, वो फेल हो गई, अब दूसरे को दिया है। अब प्रोजेक्ट 60-70% पूरा हुआ है, और वो ब्रिज जो है वो माजुली आइलैंड वाला ब्रिज अब पूरा होते हुए आया है। नेचीपू होज कॉरिडोर पूरा हो रहा है। फ्रंटियर हाईवे हम बना रहे 22,000 करोड़ का अरुणाचल में, उसका काम जोरों में शुरू है। और ये नुमालीगढ़ में ब्रह्मपुत्रा के अंदर 22,000 करोड़ की टनल बना रहे हैं, रेलवे भी जाएगी और वो भी जाएगी अंदर से, पहली बार इमेंस टनल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोइंग तिनसुकिया जो टाइम था 7 घंटे से 2 घंटे हो गया, धुबरी फुलवाड़ी से 6 घंटे से घटकर 30 मिनट हो गया, माजुली जोराट अतरा 3 घंटे फेरी जर्नी से घटकर अब 30 मिनट हो जाएगी, तेजपुर डिब्रूगढ़ ये 8 घंटे का घटकर 4 घंटे हो गया, नुमालीगढ़ अंडरवाटर टनल का जब बनेगी तो गोपुर से नुमालीगढ़ का ट्रैवल टाइम 6 घंटे से 30 मिनट हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है ये तो विशेष रूप से हो रही है। पर इसके साथ साथ मैं आज आपने मुझे बुलाया तो मैं निश्चित रूप से नुमालीगढ़ के लिए आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट घोषणा करना चाहता हूँ, और वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो एक प्रकार से यहाँ के विकास की ये एक प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, जो सिलचर टू शिलोंग ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है, 165 किलोमीटर 23,000 करोड़ की। उसके बाद में शिलोंग टू गुवाहाटी ये भी ग्रीन फील्ड है, ये 66 किलोमीटर 8,500 करोड़ की। और गुवाहाटी टू शिलोंग ये ब्राउन फील्ड प्लस ग्रीन फील्ड है, इसका डीपीआर बन रहा है 18,500 करोड़ का। तो ये टोटल 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसी साल आपने लैंड एक्विजिशन कर दिया तो ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। वैसे सिलचर टू शिलोंग को कैबिनेट ने अप्रूवल ऑलरेडी दिया है, आप लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, बाकी दोनों को भी करा देंगे तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं 40,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपके मेघालय के लिए घोषणा कर रहा हूँ। ये दरुगिरी वाघमारा डालू 136 किलोमीटर 4,000 करोड़, ये भी हमारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की घोषणा करता हूँ। हमने ये कैबिनेट के लिए अब भेज दिया है। ये इससे रिमोट विलेजेस इन वेस्ट गारो हिल्स इन साउथ गारो हिल्स नियर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ये बहुत उपयोगी होगा। गुवाहाटी वाया डायनाडुबी ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी।
और रानीखोर इन साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी। दालू से बागमारा 4 आवर्स से 2 घंटे हो जाएगा और बागमारा से दारूगिरी 4 घंटे से 2 घंटे हो जाएगा। फिर 4 लेन ग्रीनफील्ड शिलोंग टू सिलचर 165 किलोमीटर, ये 23,000 करोड़ का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। बिड्स इनवाइट किए गए हैं। जैसे भी आप लैंड एक्विजिशन करके देंगे, ये भी हम लोग तुरंत काम शुरू कर देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। फिर जोराबाट से बारापानी 66 किलोमीटर, ये 8,500 करोड़ का है। इसका भी डीपीआर अंतिम स्थिति में है। अगर लैंड एक्विजिशन हो गई तो इसी साल हम इसको शुरू करेंगे। गुवाहाटी जोराबाट विथ शिलोंग बारापानी, ये लेंथ रिड्यूस फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 66 किलोमीटर, ये भी बहुत उपयोगी होगा। इट विल बिकम ए कंटिन्यूड ग्रीनफील्ड स्ट्रेच ऑफ गुवाहाटी शिलोंग सिलचर। डिस्टेंस फ्रॉम गुवाहाटी टू सिलचर विल बी रिड्यूस फ्रॉम 330 किलोमीटर टू 230 किलोमीटर। तो इसीलिए मैं वो एयरपोर्ट वालों को कह रहा था कि 1 घंटे के अंदर अगर यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे तो यहाँ का हवाई जहाज़ गुवाहाटी के लिए कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि वो चले जाएंगे। अब कभी कभी मैं भी ये अच्छा काम करता हूँ कि गलत करता मालूम नहीं। अभी दिल्ली से देहरादून फ्लाइट थी, बंद हो गई, 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में रोड बन गया। मुंबई से पूना, तो यहाँ 8 फ्लाइट थी जेट एयरवेज की, तो हाईवे बनाया हमने तो फ्लाइट बंद हो गई। अभी चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में हो रहा है, फ्लाइट बंद हो जाएगी। मैसूर से बेंगलोर तो अब पर फ्लाइट बंद हो जाएगी, तो भी यहाँ से डायरेक्ट देश भर में तो जाएगी। तो ऐसा कोई नहीं कि यहाँ से नज़दीक वाली फ़्लाइट ज़रूर बंद होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, शिलोंग, सिलचर, ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ के टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा देगी। टूरिज़्म यह ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के ऊपर खर्चा होता है। ये जो होटल्स खुल रहे, टूरिस्ट आएंगे, इससे जीएसटी तो बढ़ेगा, 49% एक्सपेंडिचर उसके लिए खर्चा होता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इसके कारण आज जो टूरिज़्म है वो 3 गुना बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसके अनुरूप रोड, पार्किंग, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्लीननेस, ये सब अच्छा रखोगे तो लोग आएंगे, गंदगी रखोगे तो नहीं आएंगे। तो अब इसका भी प्लानिंग आप जरूर करिए। चौथा प्रोजेक्ट है पोमलुम टू उमटेंगर, शिलोंग दापकी का इसका है 9.9 किलोमीटर, 350 करोड़, डीपीआर पूरा हुआ है। 4 लेनिंग ऑफ पोमलुम उमटेंगर, ये कंजेशन कम होगा इससे शिलोंग का। इम्प्रूव एक्सेस टू टूरिस्ट प्लेसेस लाइक दावकी, सोरा, चेरापूंजी एंड मावतलिंगो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद में इम्प्रूवमेंट ऑफ सिंकिंग जोन ऑन तुरा डालू सेक्टर, 72 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की। जैसे एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट है, इसमें 40,000 करोड़ हम खर्चा करके उसको हमने अच्छा बनाया ताकि एक्सीडेंट न हो। वैसे 930 स्पॉट लैंडस्लाइड स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए। 72 लोकेशंस आपके मेघालय में है। 160 करोड़ उसके लिए सैंक्शन किए हैं। और निश्चित रूप से ये काम सिंकिंग स्टेज का भी हमने डीलिंग किया है। और 72 सिंकिंग लोकेशंस 9.5 किलोमीटर आइडेंटिफाई किए हैं। और इसमें फिर से एक बार आईआईटी पटना का भी हमने मदद ली है, इंटरनेशनल एजेंसी की मदद की है। और निश्चित रूप से ये सिंकिंग जो है, ये रिस्क विल बी एलिमिनेटेड टू प्रोवाइड ए स्टेबल राइडिंग सरफेस, इंश्योर स्मूथ और अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी फॉर कमर्शियल एंड लोकल ट्रैफिक टू द बांग्लादेश बॉर्डर नियर डालू। तो ये भी प्रॉब्लम हम निश्चित रूप से सुलझाएंगे। मैंने आपको कहा था कि रोड साइड एमिनिटीज़ में आप आइडेंटिफाई करिए। हम लोग अनेक जगह पर हज़ारों ऐसी बना रहे हैं, आपके जगह पर उसके लिए भी हम लोग आपको मदद करेंगे। हम रोपवे केबल कार 360 बना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप यहाँ भी आइडेंटिफाई करिए, उसमें हम आपको मदद करेंगे। और मैंने ये जो कहा कि अभी जो 3.5 लाख करोड़ आज की अभी तो काम कर रहे हैं और हमारा अभी ये 5 साल पूरे हो तो और 1.5 लाख करोड़ आएंगे। और हम नॉर्थ ईस्ट को भारत के प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्यों में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इक्विवेलेंट लेकर जाएंगे। ये हमारा संकल्प है और ये हम पूरा करेंगे।
मुझे विश्वास है कि एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, गरीब व्यक्ति इसके हितों की रक्षा होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हेल्थ पैरामीटर्स के स्टैंडर्ड्स पूरे होंगे और फिर से एक बार अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये भाव जो है तभी जगेगा। मैं फिर से एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, ये बहुत बड़ा कन्वेंशन उन्होंने ये जो इंडस्ट्रियल मीट ऑर्गेनाइज की है, दिस इज़ गोइंग टू इंस्पायर एंड मोटिवेट ऑल द इन्वेस्टर, क्योंकि उनको निश्चित रूप से ये प्रेरणा देगा, क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवा इंडस्ट्री नहीं आएगी। अगर अच्छे रोड बनेंगे, अच्छे वाटरवेज बनेंगे, अच्छी कनेक्टिविटी आएगी, हाईवेज आएंगे, ये सब बातों पावर रहेगी, तो निश्चित रूप से विकास के लिए गतिशीलता मिलेगी। मैं फिर से एक बार इतना ही विश्वास देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार मेघालय सरकार के साथ पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़ी रहेगी और इस विकास में पूरा सहयोग करेगी, ऐसा विश्वास देता हूँ। और फिर से 15-20 दिन में मैं नागालैंड में आने वाला हूँ, तब वहाँ मैं नागालैंड की घोषणा करूँगा। बाकी बातों के लिए आपके साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर समझ लूँगा। फिर से एक बार आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। इस ज्ञानवर्धक और प्रेरक संबोधन के लिए आपका धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी। Thank you so much, sir. It was a true honor to hear your wise words, and to have your presence here is a bigger honor for us. Therefore, it is a privilege for the state of Meghalaya to now felicitate you, sir, the Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Government of India, Shri Nitin Gadkari ji, with a very special host state gift, a Duitara. May I request the Honorable Chief Minister of Meghalaya to kindly present this special state gift to our Honorable Union Minister. And may I again request the Honorable Chief Minister of Meghalaya to kindly present the state host gift to Shri Nepio Rio, Chief Minister of Nagaland, and also to the Deputy Chief Minister of Nagaland, T.R. Zeliang. We thank our dignitaries on the dais for their gracious presence. And now, ladies and gentlemen, I will request Sri Vaibhav Dange, founder, Build India Foundation, to propose the vote of thanks. On dais. I know we are completely out of time. We are running late. Honorable Minister has to attend another program, so I will be very, very short. But sir, just to put our gratitude on record, thank you, sir, Honorable Gadkari ji. As you say, sir, A square plus 2 square plus twice AB, you have proven that in 12 years of your as a minister, road transport and highways, the phenomenal transformation the highway sector has seen in India needs no further introduction. I think let's put our hands together and thank Honorable Minister for the kind of transformation he has done in the country and the kind of gracious announcement he has done today for the Meghalaya and promise for the rest of the other 7 states of Northeast. I think this drive will definitely is one of the reasons why this kind of gathering summits are done. Thank you so much, sir. We started as an idea. We went to Honorable Chief Minister of Meghalaya with the idea, and he was so quick. I still remember he was having his cabinet retreat. He came out for 10 minutes, and within 10 minutes, he said, "It's a good idea, let's do it." And then after, he became the kind of force for us. He provided the leadership. As we all understand, Northeast is so interlinked with each other, all states. So we need to collectively think for Northeast and collectively look at growth and transformation of Northeast. And thank you, sir, for taking that leadership. Idea which started with 400 delegates, and we shifted from earlier convention center to this larger convention center, and today 1200 plus delegates, exhibitor. I think it's a phenomenal success, sir. Without your leadership, we could not have done. I
sincerely want to thank Honorable Chief Minister of Nagaland. Thank you, sir, for taking time out, coming here and, presenting your thoughts to the audience and to the everybody. All the respected Deputy Chief Ministers of Meghalaya, both Priston sir and Mr. Dhar, and the Honorable Deputy Chief Minister of Nagaland, thank you, sir. Sanjay Jaju sir, Secretary Donier, thank you, sir. You have been always a great support. The day we went to him, he has been very forthcoming. He also joined the curtain as a curtain raiser in Delhi, and his ministry has wholeheartedly, the Department of Northeastern Region has wholeheartedly supported this event, and he was always there to guide us. Thank you, sir. We also want to thank various union ministries, Ministry of Road Transport as Highways, Ministry of Tourism, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Department of Northeastern Region, Ministry of Food Processing Industries, all the Ministry of Ports and Waterways, all the ministries for their gracious support and participation in the Northeast Infrastructure Summit. We also want to thank state government led by Honorable Chief Minister, Honorable Chief Secretary sir, and Sanjay Goel sir, and so many officers. In fact, I cannot take everybody's name because of the paucity of time, but the state government has been at the forefront of, they have been kind of a handholders, partners to us. Thank you, sir. Sanjay Goel sir, Chief Secretary sir, Bibrato sir, and everyone in your team, sir. They have been so phenomenal in helping us put this all together. Thank you so much, sir. We also want to thank all the other 7 state governments of the Northeastern region. All the state governments have sent their representative, their delegations, their senior ministers, senior officials are participating. Thank you everybody for their participation. All other union ministers who are participating. Last but not least, our industry partners, industry associations, our exhibitors, our sponsors, our delegates, our media friends. Thank you so much. Northeast is rising and connecting opportunities. Thank you so much. Thank you, sir. Once again, a deep gratitude to our guests on the dais. May we request everyone to kindly rise as our Honorable Union Minister leaves the stage, and he will join us for lunch. Thank you very much, sir, for your gracious presence. Thank you, sir. And for the participants present here, ladies and gentlemen, please join us for networking lunch. Enjoy your lunch, and we will be back in the hall by 3:15 when we will be starting with our first panel discussion. And it's going to be a very interesting discussion, so have your lunch as quickly as possible and return to the hall. Thank you. Thank you once again, and we wish you a productive and an engaging summit ahead.